स्वागत दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट एडिक्टर स्पेशल प्री मैच लाइव शो फॉर आईपीएल 15। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा सर, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन एंड अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। वेलकम अगेन अशोक सर। Thank you, Adi. Thank you very much. तो दोस्तों आज मैच नंबर 69 सेकंड लास्ट गेम ऑफ द ग्रुप स्टेजेस मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। आज दोनों टीम की बहुत ही डिफरेंट इंटेंशंस हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें तो कॉन्सोलेशन के लिए, प्राइड के लिए, एंडिंग द सीजन ऑन अ हाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इट इज डू और डाई, दे हैव टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स इफ दे विन टुडे। और इनके लिए ये वर्चुअल एलिमिनेटर बिफोर एक्चुअल एलिमिनेटर है। मैच होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। तो अशोक सर, आज आरसीबी फैंस बन गए हैं मुंबई इंडियन सपोर्टर्स। आरसीबी के कैप्टन फैफ ने बोला है दैट ही इज बैंकिंग ऑन रोहित शर्मा टू डू गुड। तो क्या लग रहा है सर, क्या हो सकती है आज रोहित शर्मा की अप्रोच? देखिए, रोहित शर्मा की अप्रोच यही है कि he wants to go on a high, as you very rightly said. So I think Bombay has got nothing to lose. कहते हैं ना, मेरे सर पे टोपी नहीं, दूसरे के सर पे रहने नहीं दूंगा, लगभग that attitude. No care. He is trying everybody in his 26 among the 26 players, and I hope Arjun Tendulkar gets a look. And we all are waiting with bated breath. The entire India is waiting. Where is Arjun Tendulkar? They are all asking. I hope this is the last game of the season. I hope he gets a look in, because जो कहते हैं ना कि आपको पत्ता शो करना होता है, आप पत्ता छुपा के बाजी डिक्लेयर नहीं कर सकते। So I think somewhere along the line, Arjun Tendulkar will have to be let loose for Mumbai Indians. And not to forget, Mumbai Indians would like to spoil. They are party spoilers as of now. So they can spoil Delhi Capitals party, and they will try. And I hope they play Tim David at number 3. I'm amazed that you got such a great player, such a good 2020 player, and you didn't play him for 8 matches. You shot yourself in the foot and you had to pay the price. So all in all, nothing to lose. The batting comes good. We'll have to wait and watch. But the youngsters, the new youngsters, the 2-3 guys who have not got a chance, if they get a look in. So I don't know what about the bowling, because they will have a very weakened bowling lineup. But all in all, a good exercise for them. But I still feel Delhi Capitals will pull through. Sorry for the RCB fans, but I think so. Delhi Capitals seems to be the side which might be in the playoffs. बिल्कुल सर। और हम बात करें अब दिल्ली कैपिटल्स के स्किपर ऋषभ पंत पे सर, अभी तक 50 नहीं बनाई और लास्ट गेम में भी सर हमने देखा कि एक छक्का मारा, लिविंगस्टोन ने थोड़ा टॉन्ट किया एंड देन ही गिव अवे हिज विकेट। तो सर इस क्रंच गेम में अगर वो क्रूशियल टाइम में आए तो कितना इंपॉर्टेंट होगा उनको टू अप्रोच इट विद स्टेबिलिटी? He has to. He's not a youngster anymore. He's a senior player. People are talking about him captaining the Indian team. And plus, not to forget, he's the captain of the side. So you have to lead from front. People keep sledging you. People do everything. You can't throw it away the way he threw it as the last game. It defies the experience for what he has. So surely he'll have to dig deep, play well, and take a leaf out of somebody like Michael Marsh, who is once he's got going, he seems to be a different player altogether. और सर हम बात करें ऋषभ पंत का, एक जो स्टिफ कंपटीशन आ सकता है जसप्रीत बुमराह से। सर 12 टाइम में जसप्रीत बुमराह डिसमिस्ड हिम 6 टाइम्स। तो सर आज अगर बुमराह और ऋषभ पंत का आमना सामना हुआ तो who do you think would come out on top? See the way Jasprit is bowling. I don't know whether Jasprit, probably when Rishabh comes, Jasprit will come on to bowl, because that is when in the middle overs. Provided he starts the bowling, then maybe he might not come on to bowl. But I would say Jasprit, the form he's in, the form he's coming back in. He also didn't have a great IPL, but he bounced back with a fifer. But since then, he's been bowling well now. And whereas Rishabh is in still that hit and miss mode. So maybe it is a turning point for him, but on the form, I will say Jasprit Bumrah. और सर क्या लग रहा है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि डैनियल सैम्स और मेरिडिथ ने फर्स्ट और सेकंड ओवर बोल किया, तो आज के सर आपको लग रहा है कि बुमराह शुड बोल विद इन फर्स्ट और सेकंड ओवर? I always say he should bowl. Daniel Sams is bowling well now, but he should bowl, because Daniel Sams putting pressure on one side, Bumrah can pick up early wickets. You want early breakthroughs. If you have early breakthroughs, if supposing he gets Warner out because he moves the ball away from the left-hander,
So then it's a game set and match to Mumbai Indians, because Warner is the anchor around whom the entire Delhi Capitals innings revolves. So I think it might not be a bad idea to give at least start with Bumrah and see how things go. और दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे ऋषभ पंत की। 2017 में ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था ऑफ द मोस्ट रन्स बाय अ टीनेजर इन एन आईपीएल सीजन। पर इस साल मुंबई के सेंसेशन द सिल्वर लाइनिंग इन देयर सीजन तिलक वर्मा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या लग रहा है सर, एक बहुत मजबूत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिल गया है मुंबई इंडियंस को इस साल इन तिलक वर्मा? Yes, definitely so. And he's batting beautifully. Even in Mushtaq Ali, he batted beautifully. The moment he gets out, Hyderabad gets out. So same with now Mumbai Indians. The moment Tilak Verma gets out, the middle order just caves in. So he is a phenomenal plus for Mumbai Indians. And he's been given the chances and he's grabbed it with both hands. So I would say Tilak Verma and Tim David are the game changers for Mumbai Indians tonight. और सर नाउ वी टॉक अबाउट डीसी टॉप थ्री। सर सरफराज खान की एंट्री हो गई थी इनटू द ओपनिंग स्पॉट, और जो 2-3 इनिंग्स में जो एक्सेलरेशन वो सरफराज खान ने प्रोवाइड किया था लास्ट गेम, डेविड वार्नर अनफॉर्चुनेटली मिस आउट करे और मिचेल मार्श पिछले 2 गेम में बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। तो सर इन टॉप 3 से आपको किन 1-2 बैट्समैन से सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही है आज? I would say Mitchell Marsh and David Warner, definitely. Sarfraz played a little cameo, 16 balls, 32 runs. He played a little cameo after Warner got out, but you don't expect him to be, because he's not an explosive player. He's a guy who can improvise, but he's not a guy who can hit over the top and hit ball out of the park, but he's a great improviser. But if I had to pick 2 batters out of the top 3, it has to be Warner and Mitchell Marsh. और सर हम बात करें टिम डेविड की, अभी 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट ओवरऑल सीजन का मेंटेन किया था। लास्ट गेम ऑलमोस्ट टुक द गेम अवे फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। तो इनकी फ्यूचर डेवलपमेंट आप कैसे देख रहे हो सर मुंबई की मिडिल ऑर्डर में? देखिए टिम डेविड, मैं अभी तक हैरान हूं कि टिम डेविड को 8 मैच क्यों नहीं खिलाए गए। तो क्योंकि टिम डेविड ऐसे हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। तो ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर एंड यू शुड हैव बीन. I think he's going to be in Mumbai Indians for a long time. He's just 22. Because he's played all around the world, people think he's 25, 26, but he's just 22. And he's a phenomenal striker, as I said, 200 strike rate, and he's a match winner. The great thing about him is he's a match winner, and he can turn the game around with his batting. और सर हमने देखा है कि मिचेल मार्श का ओवरऑल कंपेयर टू पेस अगेंस्ट स्पिन वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, और मुंबई इंडियंस के लास्ट गेम में सर मयंक मार्कंडे और संजय यादव विकेटलेस गए थे। तो सर क्या ऋतिक शौकीन, मुरुगन अश्विन या कार्तिकेय सिंह को दोबारा टीम में हम देख सकते हैं आज? Yeah, maybe Murugan Ashwin can come back into the side. He's a phenomenal player and a phenomenal bowler. But I think today they might try all the people. So they might go with, because one game is not good enough for Sanjay Yadav and Markande. So that definitely it is going to be a big plus. But I think there might be a lot of changes in Mumbai Indians tonight. और सर एक व्यूअर क्वेश्चन आया है कि मुंबई इंडियंस को फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन बेंच से हम देख सकते हैं सो दैट दे कैन अराइव एट अ पॉसिबल प्लेइंग 11 फॉर नेक्स्ट ईयर? Yes, he can. He can. So that is where the problem is. They have to try their bench strength. They have to try their people. So that is going to be very vital. But I hope and pray, Addy, for the sake of a lot of fans, that Arjun Tendulkar gets a break, and shows the world what he's made of. एंड सर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स पे, सर खलील अहमद अभी हाईएस्ट पेस विकेट टेकर उनके लिए, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल लेड द स्पिन अटैक सर लास्ट गेम, 4 विकेट और सिर्फ 28 रन्स दिए थे इनके 7 ओवर में। तो सर कौन से बॉलर्स आपको लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं आज? देखिए कुलदीप यादव डेफिनेटली, अक्षर पटेल डेफिनेटली, एंड द बिगेस्ट प्लस दे हैव इज Nokia. They have now an express bowler, a quick bowler who can turn the tide in their favor, and gradually is getting back in form. For me, Delhi Capital is peaking at the right time. They can be a challenger for any side, so they can
turn the tables on any side, and they're a phenomenal side with Nokia in full flight, Mitchell Marsh batting beautifully, Powell batting beautiful, David Warner batting beautifully, and Rishabh Pant yet to come to the party. So they seem to be a phenomenal side. And with the bowling, Akshar Patel bowled magnificently, miserly self, Kuldeep bowled beautifully, and so did Nokia. Khalil Ahmed, as he said, is the highest wicket taker, sure. और सर हम बात करें टॉस पे सर वानखेड़े के लास्ट गेम में वी सॉ चेजिंग टीम वन और लास्ट दो टाइम कैप्टन हु वन द टॉस चोज टू बैट बट फील्डिंग टीम हैज वन तो क्या लग रहा है सर आज अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है टॉस पे देखिए जब प्रेशर गेम होता है बिकॉज इट्स अ प्रेशर गेम इट्स अ नॉकआउट फॉर दिल्ली कैपिटल आई वुड एक्सपेक्ट देम टू विन द टॉस पुट द रन्स ऑन द बोर्ड एंड विन द गेम because I think small boundaries in Wankhede, wicket conducive for batting. So I think it is going to be whichever side wins the toss will try to bat first. और सर दिल्ली कैपिटल्स में लास्ट गेम दे डिड समथिंग दे डिडंट डू द फुल सीजन 2 विन्स इन रो अब सर 3 विन इन रो करने चाहिए तो सर कौन से की प्लेयर्स आप चूज करोगे दिल्ली कैपिटल्स से See Delhi Capitals के लिए I would go with David Warner, definitely David Warner and Mitchell Marsh, two guys from Delhi Capitals. And if I had to pick somebody from Mumbai Indians, I might go with Tim David, surely Tim David and Tilak Warner. एंड फाइनली सर मोहम्मद रिजवान अहमद जी ने पूछा है कि हु विल विन टुडे सर दिल्ली 3 in a row and into the playoffs या मुंबई इंडियंस टू पार्टी poop I would say Delhi Capitals by far because Mumbai Indians going to try the youngsters, so they might not have such a strong side. So it's I would say 100% Delhi Capitals. Okay, and with that, guys, we're done with match preview number 69. Tomorrow, we will see you guys for the final match preview of the league stage. Many thanks, Ashok, sir, for the great insights. Thank you,